Here you can see transformers. Again, here also you can see transformers. Okay. These transformers are used for transferring power from one place to other place. Now transformers, just a minute. Now transformer is a device which helps transferring energy from one end to other end, from one winding to other winding. Transformer construction has two important parts. One is winding, other is magnetic core. Magnetic core is made up of magnetic material. In short, windings are made up of a copper wire. That's again in short. Okay. Transformers EMF equations. Its equation is having n1 number of turns on primary and 2 number of turns on secondary. So you can see here a numerical used to come on this part. Here you can see n1 is the number of turns of primary and n2 is the number of turns on secondary. n2. You can see n2 is the number of turns on secondary. So n1, n2 are important here in any calculations. So n1 equal to number of turns of primary winding. Primary means the winding connected to supply is called as primary. Secondary winding is mostly connected to load. On secondary winding we can have a bulb, etc. Phi m is a flux in transformer core. F is a frequency of supply. Normally in idiot is 50 Hz. Even E2 are called to be RMS value of EMF. This you need to remember, RMS value of EMF. Any voltage and current given to you is always RMS. Okay. Now let us go ahead. If you go through derivations, derivation says that EMF equation is given by formula. There is a derivations, but important for you is to remember only the formula. Okay. And most probably these formulas will be given in question paper again. E1 equal to is a formula which you can remember actually. E1 equal to and E2 equal to. The formula for E2 is available here. What is the difference? E2 in the formula of E2 there is N2 and in the formula of E1 there is N1. Rest formula is same. Rest formula is same. Okay. E1 equal to 4.44 F into 5M into N1. E2 equal to 4.44 F into 5M into N2. These are same. And based upon same, you can have numerical. Transformers can be step up transformers where voltage and primary, यहाँ पर primary जो होता है उसका voltage कम है. You can see here. The voltage of primary is 120 volt and voltage of secondary is very high, light is 240 volt. So input is low, output is high, so it is called as step up. In this case, what is you can see input is 120 and output is just 30. It is just 30. So it is down because voltage in primary is 120, which is high, and voltage in secondary is 30, which is low. So this is called a stepped down transformers. Probably you may be knowing the concept of this because down means low voltage and high means high voltage. Down means primary voltage is good, but secondary voltage is not good. You can see here also. 120 is a high voltage and 30 volt is a low voltage. So we call this transformer as a step down transformer because voltage is getting down. This transformer is called as step up transformers because in this case voltage is 120 high. No, it's low. 120 is low. And low voltage को आप किसमें convert कर रहे हो? High voltage like 240. So it's called as step up. Up means increase in the voltage. Okay. Now this next formula to be remembered, it's called as VA rating. What is rating? If you talk about transformers, how much amount of load we can connect to the transformers? Rating, load. Load मतलब क्या? आपके घर में जो भी equipment है, bulb वगैरह वगैरह, that is called as load. How much amount of load you can connect across secondary, that defines the load. Example we can take it. If there's a truck of 10 ton, ये truck है, उसका capacity कितना है? 10 ton. 10 ton. 10 ton is the capacity of truck, and if load on truck is also same.
What is the rating of truck? 10 ton. मतलब कंपनी ने बनाते वक्त ऐसा बनाया है इसे कि ये 10 टन का लोड आराम से कैरी कर सकता है विदाउट गेटिंग ओवरबर्डन. Maximum rating of a truck is 10 ton. And if the load on truck is also 10 ton, you can see here there is a load. You can see यहाँ पे एक load है. What is the rating of load? The load is also the box. इसके कंटेनर में जो भी लोड होगा वो भी 10 टन का ही है. Then we call the truck is at what load? Full load. Because the rating of truck and the load on truck is also same. Rating of truck is 10 ton, load is also 10 ton. We call truck on full load. What we call full load. What is full load? From what is full load? Anyone, please? What do you mean by full load? Anyone? सर मैक्सिमम पावर सप्लाई. एक मिनट हाँ. अच्छा 3 है अभी भी. Recording in progress. But there are only 3 students right now also. Increase नहीं हुआ अभी number. Siddharth, it's not a maximum power supply, it's a maximum load the device can carry. Because truck is of 10 ton, this truck is having a rating of 10 ton and the load on truck is also 10 ton. ट्रक का रेटिंग है मतलब क्या? जब कंपनी इस ट्रक को बना रही थी तब उसने विचार करके बनाया है कि ये 10 टन का लोड आराम से कैरी कर सकता है. That is called as rating of a machine or equipment or a transformers or a truck also. Without getting overheated, without getting damaged, this can carry a load of 10 ton. That is called as rating of a truck while designing the product. Okay. And if also carrying the load of same, मतलब 10 टन का ही लोड कैरी कर रहा है तो क्या कहेंगे इसे? रेटिंग इज 10 टन एंड लोड इज ऑल्सो 10 टन. ये जो बॉक्स है कंटेनर उसमें लोड कितना है? 10 टन का ही है. 110 टी टी फॉर टन. अगर लोड भी 10 टन का है सो रेटिंग 10 टन, लोड इज ऑल्सो 10 टन. वी कॉल ट्रक ऑन फुल लोड. फुल लोड मतलब इसके ऊपर जितना चाहिए था लोड उतना ही आ गया है. फुल लोड, फुल्ली लोडेड ट्रक. अगर इससे ज्यादा रखोगे तो ओवरबर्डन हो जाएगा, कम रखोगे तो अंडर लोड हो जाएगा. ओके. In this way, we can explain the concept of what is called as full load. So if we have a transformer, the transformer is of 10 kVA and load on transformer is also 10 kVA. That is rating मतलब maximum capacity is called as 10 ton. And load is also of 10 kVA. उसका rating भी 10 kVA है. 10 kVA, 10 ton, 10 rating is 10 kVA. So we call truck is at
No, transverse. Transverse is at full load. And at that time, the current can be found by these formulas. At that time, current can be found by these formulas. This is formula which we use. V rating divided by voltage of primary is called as current of primary. Is called as current of primary. Current of primary यहाँ पर निकाला गया है. And current of secondary कैसे निकालोगे? Full load current of secondary is found by V rating divided by voltage of secondary. प्राइमरी का करंट निकालते हो प्राइमरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट निकालते हो सेकेंडरी का वोल्टेज डिनोमिनेटर में. Okay, let us solve numerical. So students, this can be there for 4 to 6 marks. Here you have to use the formula of EMF equations, and number 2 you have to use the formula of V rating. This formula you have to use. Okay. So read the question carefully. A 10 kVA, 10 kVA मतलब क्या? This truck can carry a load of 10 kVA. A truck not, a transformer. A transformer can carry a load of 10 kVA to its maximum capacity. So instead of truck, we have kVA. A transformer can have a load of 10 kVA to its maximum capacity. It is called as rating of transformers. It is 10 kVA given. The voltage of primary is given as E1. Voltage of primary क्या होता है? E1. E मतलब voltage of primary या उसको आप V1 भी कह सकते हो. V1 को या E1 को. वन ही है, एक ही है. It is a 1. It is a E1. And what is secondary voltage? E2. E2 मतलब कौन? 230 volt. E2. So E1 and E2 are given to you as well as rating of transformers. What you need to find? So here we have written everything like E1 and E2, VA rating, 50 Hz frequency, and core area. What is core area? Area of core. If flux is flowing from transformers, just a minute. Okay, color is available. अगर फ्लक्स जब फ्लो होता है, कौन फ्लक्स? ट्रांसफॉर्मर जब फ्लक्स फ्लो होता है तो जो एरिया मिलता है परपेंडिकुलर एरिया, जब फ्लक्स फ्लो होता है तो एरिया परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर कहते हैं. जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है मैग्नेटिक मटेरियल, उसका एरिया क्या है? दैट इज एरिया ऑफ कोर. एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कोर एरिया, मैग्नेटिक कोर एरिया, दैट इज एरिया ऑफ कोर इज 300 centimeter square. You need to convert into meters square. Flux density is 1.3 Tesla. Tesla is nothing but 1.3 Tesla is called to be 1.3 Weber per meter square also. Okay. 1.3 Weber per meter square. A cross-sectional area of core is 300 centimeter square. Is converted into meter square. 300 into 10 to power minus 4 meter square. And rest of the formula is simple for you because this formula you have to remember anyway. It may be possible that formula may be given to you in question paper. Okay. E1 is given. Similarly, you can use for E2. जहाँ जहाँ 1 1 लिखा है वहाँ पे 2 लिख दो. That's E2. Okay. So E1 is a voltage of primary and E1 is given to you as first voltage is 3300. जो first voltage होता है, just a minute, I erase everything so that you will come to know where I'm writing. So E1 is known. E1 is given to you here. This is E1. 3300 is a E1 and it's written here. यहाँ पर जब आप E1 कह रहे हो E1 तो E1 के साथ साथ आपने क्या लिया है? 3300. First voltage is E1 and second voltage is E2. E2 कौन है? E2 is here. E2 मतलब कौन? 230 वोल्ट. अगर आप E2 का फॉर्मूला यूज करें तो E2 लोगे और E1 का फॉर्मूला यूज करें तो 330 लोगे. ओके. So you can use the formulas of E1 and you can get the N1. You can use the formula of E2 and you can get the value of N2. What is not given? Phi m. For phi m, we have formula. F is a frequency 50 Hz. यहाँ पे आपको F दिया गया है. F का वैल्यू आपको क्या लेना है? 50 Hz नीचे लिखा है, 50 उसके नीचे लिखा है.
अभी phi m कहाँ से आया? So phi m, you must be knowing this formula that phi equal to BA or B equal to phi by A. Flux density is flux per unit area. And from this formula, you can find the value of phi and you can use in the okay. So once phi m is known, you can get the value of B from BA phi m, and you once phi m is known, you put in the formula. You will get the value of N1, you will get the value of N2, and you will get the current also. So what is current? Current is V rating. You can see V rating. So V rating कितना हो गया? V rating was 10 kVA. K यहाँ पे लिखा है. Just I'll erase everything now. Once again, I'll erase. Wait for pen tab because I asked someone to go in college and bring pen tab. Students, can you see here 10 kVA? Can you see 10 kVA? आपको दिखाई दे रहा है 10 kVA? ये 10 kVA एक्चुअली क्या है? ये 10 kVA उसका रेटिंग है. जस्ट लाइक ट्रक का रेटिंग क्या होता है? 10 टन. तो ये रेटिंग है इस ट्रक का, नहीं ट्रांसफॉर्मर का, 10 kVA. सो इफ VA रेटिंग इज कॉल्ड, अगर VA रेटिंग कह रहे हो तो आपको KVA रेटिंग दिया है. किसमें दिया है? KVA में दिया है. आपको लेते हो क्या लेना है ऐसे? नहीं, VA में लेना है. VA मतलब पीछे VA है, पीछे VA है, आगे K है. तो K को आप अगर हटाना चाहते हो तो उसकी जगह क्या आएगा? 10 टू पावर 3. 10 टू पावर 3. And that 10 to power 3 you can use as 10 kVA. So you can see here is a 10 kVA replaced by 10,000 VA. 10,000 VA. This is you have to remember. हमने क्या हटाया इसमें से? K हटाया सिर्फ. K की जगह क्या यूज किया है? 10 to power 3. और एक बार आपको ये याद रह जाएगा कि KVA भले ही लिखा हो लेकिन हमें लेते हो VA लेना है, तो बाद में आपको क्या करना है? सिंपल, दिस V, यहाँ पे एक V है और यहाँ पे एक V है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. नीचे एक V है, तो ये दोनों V कैंसिल हो जाएंगे. दिस V विल कैंसिल विद द फर्स्ट V. और जैसे ही V कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा? सिंपल, दिस डबल जीरो विल ऑल्सो कैंसिल विद डबल जीरो. So what will remain? 100 by 33, and 100 by 33 is 3.03. And that value of current you will get it as current in primary at full load. जब प्राइमरी वाइंडिंग फुल लोड हो जाएगा तो करंट कितना होगा प्राइमरी में? दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग. Will it be easy, this formula? This formula and numericals are easy for you. You can have a practice on this sort of numericals. Vismay has joined, okay. If you want, you can take a screenshot of this sort of numericals. Okay. The last variety of numericals which is there in Cosmos. This is the first variety of numericals where equations of EMF equation are used. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या यूज किया गया है इस यहाँ पे? EMF equation. So this is EMF equation of Cosmos. ये EMF equation है, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा. दूसरा इक्वेशन ये है जिसे हम कहते हैं करंट. करंट इज VA रेटिंग डिवाइड बाय वोल्टेज. VA रेटिंग डिवाइड बाय वोल्टेज. अगर आपको करंट ऑफ प्राइमरी निकालना है तो वोल्टेज ऑफ
प्राइमरी डिनोमिनेटर यूज करोगे, फिर आपको करंट ऑफ सेकेंडरी निकलना है। करंट ऑफ सेकेंडरी यहाँ पे I2 चाहिए, अगर आपको करंट ऑफ सेकेंडरी, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ प्राइमरी नहीं, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी यूज करोगे। सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है? 230. इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, इट इज 230 at the top. I am just highlighting right now. 230 is the voltage of secondary and first was of primary. आप 330 की जगह 3300 की जगह 230 यूज करो, आपका वोट करंट ऑफ सेकेंडरी निकालना है तो। ओके, transformers efficiency. Efficiency of any device is always calculated by the formula output voltage divided by. Just a minute, it's not going to the top here. Okay. Okay. Wait for a few minutes. Pen tab will come in a short while. The ratio of output power divided by input power. Is efficiency is always equal to efficiency symbol is always equal to the ratio of output power of a device to the input power. If you have to calculate the efficiency of any product, this is product given in box. अगर ये box में product है, तो उसका output कैसे, output power क्या होगा? That is power delivered to load. If you take a transverse, okay, just a minute. If you take this as transverse, this is transverse. You can see transverse. Okay, this is transverse. If you want to find out the efficiency of transverse, what you will do? What you will do? You will find out what is the input power deliver. यहाँ पे आपने input power कितना deliver किया है? यहाँ पे आपका input power कितना है? जो power लिया गया वो input power होगा, और जो power deliver हो गया, that is power delivered to outside real world. Power delivered will be called as what? Output power. So output power is delivered by load. Here is we are having output power. Okay, output is delivered, and what are the losses? यहाँ पर जो loss होगा, बीच में क्या होता है? Losses. क्योंकि आप जब पावर लेते हो और जब पावर देते हो तो बीच में पावर लॉस हो सकता है, losses. And the power is lost in between is of two types. Transformer losses are of two types, that is being narrated in the same slide. So we have input power. Input power is always electrical. Output power is also electrical, and the losses are of two types in between. They are called as iron losses. Iron losses take place in iron material. Iron मतलब copper. ये जो आपका iron material है, iron मतलब copper magnetic material. ये जो आपका magnetic material है, इस magnetic material में जो loss होता है उसको कहते हैं iron losses. ओके, और जो दूसरा लॉस है जो वाइंडिंग में होता है, वाइंडिंग मतलब कौन? ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ट्रांसफर के अंदर दो वाइंडिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको शायद। दिस वाइंडिंग यू कैन कॉल एज द प्राइमरी वाइंडिंग। द प्राइमरी वाइंडिंग इज denoted by symbol P for primary. Here we are using letter P. And there is another winding called as secondary winding. This is called as symbol, represented by symbol S. S for secondary. So there are two windings called as P and S. P for primary, S for secondary. In this winding, which are made up of copper, मतलब copper wire windings. So since this winding is made up of copper wire, so losses takes place in those wire called as copper losses. Copper loss is variable loss because copper loss will vary as per current. अगर कोई ट्रक लेते हो तो ट्रक में अगर लोड कम है तो फ्यूल कम लगता है,
और किसी ट्रक में लोड ज्यादा हो तो फ्यूल ज्यादा लगता है। वैसे ही करंट अगर ज्यादा हो वाइंडिंग में, वाइंडिंग जो दिख रही है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें अगर करंट ज्यादा होगा तो लॉसेस ज्यादा होंगे, आई स्क्वायर आर। और वाइंडिंग में करंट कम होगा, और वाइंडिंग में करंट किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। हियर वी हैव लोड, दिस इज लोड। ये लोड जो होता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ट्रक के ऊपर हर वक्त जरूरी नहीं कि उसके ऊपर 10 टन ही लोड हो। ट्रक कैन बी लेस, ट्रक कैन बी लेस लोडेड, इट कैन बी नो लोडेड, इट कैन बी some 70% loaded, 100% loaded, likewise. Okay, so load on truck or a transformer can vary, but the losses which are called as iron losses will be constant. Iron losses are constant because they will not vary, because iron losses depend upon voltage. And copper losses, copper loss takes place in an copper wire, and copper losses depend upon current. This current will change. This current will change in I1, and this current will change in I2. That is secondary winding. Current primary, current secondary will change as per what? Load. और लोड चेंज होता है बिकॉज ऑफ actual load on a transformer winding. So if load is changing, current will change, and current is changing, copper loss will also change. And that's why the copper loss is called to be variable loss. Okay, these sort of questions can be there for MCQ exams. So efficiency is always given by formula. Efficiency is always given by formula. Efficiency of a device is always equal to what? Output power, which is power delivered to load. ये जो पावर लोड है, यहाँ पे जो लोड होता है, इस लोड को जो पावर डिलीवर किया जाएगा, लोड को जो पावर डिलीवर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट पावर। और जो पावर लिया गया है एज ए इनपुट, यहाँ पे जो पावर इनपुट, जो इनपुट लिया गया था, ओके, जो पावर यहाँ पे लिया गया था वो हो गया इनपुट पावर। सो इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच में जो लॉस हो जाएगा, एल, एल फॉर लॉस, यहाँ पर मैं एल लिख रहा हूँ। ये जो एल है वो एल फॉर लॉस। लॉस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस which is variable loss, and second is the iron loss, which is a constant loss. Symbol of iron is PII for iron. Cu का symbol होता है copper, copper मतलब copper loss. So PCU is for copper loss. Okay, स्टूडेंट आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ रहा है? इनपुट पावर मतलब पावर जो लिया गया वो इनपुट पावर है, जो पावर डिलीवर हुआ वो आउटपुट पावर है। डिलीवर पावर जो होता है वो लोड को ही होता है। लाइक इक्विपमेंट एट योर होम, they are the load on a electrical transformers which is in your area. आपके घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसके ऊपर आपके घर के सारे डिवाइसेस क्या है? लोड है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स, all your load will come, and on primary side your supply will come, which will be converted to secondary voltage delivered to you. Okay, students, these formulas will be given to you in exams. This formula will be given to you in exams. Okay, this formula, efficiency or transformer, will be given to you in exams. What you have to use correctly? The value of x, where x equal to 1 for full load. Full load मतलब क्या? 100% load. 100% load divided by 100 is 1. अगर लोड अगर 50% है तो 50% डिवाइड बाय 100, 50% डिवाइड बाय 100 और 100% इज इक्वल टू 1/2. 50 divided by 100 is 1/2, and 100 1/2 can be called as 0.5. So value of x will be 0.5 for half load. अगर आपके ट्रांसफर के ऊपर 70% लोड है, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर्स रेटिंग 10 kVA, ट्रांसफॉर्मर कितने kVA का? 10 का है, लेकिन उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है? जस्ट 7%, 7 kVA। उसके ऊपर लोड कितना है? 7। मतलब लोड कितना परसेंट हो गया? ट्रांसफॉर्मर 10 kVA का है, लेकिन लोड कितना आ रहा है? 70%। तो 7 डिवाइड बाय 10, 7 डिवाइड बाय 10 is 0.7, and 0.7 in percentage is called as 70%. Because 0.7 into 100, 7/10 मतलब 0.7, and 0.7 का 100 परसेंटेज निकले तो कितना हो जाता है? 70%.
सो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर 70% लोडेड पे है, मतलब उसका जो रेटिंग है 10, उसकी तुलना में ये 7 क्या है, 70% हो गया। ट्रांसफॉर्मर इज 70% फुल्ली लोडेड। What is 100% loaded? Anyone can explain what is 100% loaded? What is 100% loaded? यहाँ पे 100% लोडेड क्या होता है? कि ट्रक के ऊपर लोड है, लोड भी कितना केवी का होना चाहिए, 10 का, और ट्रांसफर का रेटिंग भी होना चाहिए 10 का। ट्रांसफर इज 10 केवी रेटेड एंड लोड इज ऑल्सो 10 केवी रेटेड। वी कॉल ट्रांसफर इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब क्या, 10 केवी का लोड और 10 केवी का रेटिंग। तो 10 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना होता है, 10 केवी का लोड डिवाइडेड बाय व्हाट, 10 केवी का रेटिंग। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ 10 बाय 10? x equal to what, it will be 1. X equal to 1. That's written here. Value of x will be equal to 1 when the transformer is fully loaded. ट्रांसफर के ऊपर लोड अगर 70% हो तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर 70% डिवाइड बाय 100%, 70% डिवाइड बाय 100% इज 0.7, सो x का वैल्यू 0.7 हो जाता है उस वक्त जब ट्रांसफर 70% ऑफ फुल लोड पे लोड हो जाता है। स्टूडेंट्स, दिस वैल्यूज यू हैव टू यूज इन फॉर्मूलाज करेक्टली एंड यू हैव टू गेट द आंसर, दैट्स ऑल। Just a minute. Highlighter I am going to use now. Okay, so this is a formula which is of much importance for you. It will be given directly in question paper. What is x? You must know. What is x? X का value depend करता है on the value of the data which is asked in question. अगर क्वेश्चन पे पूछा गया कि फाइंड द एफिशिएंसी एट फुल लोड अगर कहेंगे तो x इक्वल टू 1। हाफ लोड कहते हैं तो x हाफ लोड मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर इज हाफ लोडेड। हाफ लोड है मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर 10 केवी का है लेकिन उसके ऊपर लोड कितना है, हाफ लोड। 10 केवी का रेटिंग बनाते वक्त उसे हमने 10 केवी के लिए बनाया था, लेकिन उसके ऊपर लोड है हाफ, मतलब ओनली 5 केवीए। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रक का, ट्रक 10 टन का है लेकिन उसके ऊपर लोड 10 टन ही होना चाहिए रोज रोज, नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर लोड कभी कभी 5 टन आ रहा हो। इन केस ऑफ 5 टन of load on an truck of 10 ton, we call truck as at half load. Half load मतलब क्या, 5 टन डिवाइड बाय 10 टन, 5 टन डिवाइड बाय 10 टन कितना हो जाता है, व्हाट इज 5 बाय 10, कैन वी कॉल एज x इक्वल टू 1 बाय 2। एक्चुअल लोड कितना है 5 टन, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग कितना है 10 टन। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x is a fraction of load and that x will use as a 0.5, x equal to 0.5 for half load, got it? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Students, this is important, this line is important for you. Okay, if you want you can take screenshot, but after some time I'll erase all. Now if you want you can take screenshot. Okay,
What is X? I was trying to explain to you. What is X? I was trying to explain to you. V rating is given in numerical. V rating is given in numerical like 10 kVA. अगर 10 kVA है तो आप 10 नहीं लोगे, 10 नहीं लोगे, 10 की जगह 10,000 यूज करोगे, 10 के साथ और एक 3 जीरो, बिकॉज K रिप्लेस बाय 3 zeros. Okay, 10,000 you'll be using for 10 kVA because they are adding VA. You have to write only VA, not kVA. So X is known, yes. V rating is known, yes. पावर फैक्टर given in numerical, PF is यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, पावर फैक्टर वो दिया रहेगा डायरेक्टली. X is given, yes. पहला जो VA रेटिंग दिया था वही पावर फैक्टर दिया है. इसमें सिर्फ प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस. स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, प्लस नहीं यूज करते ठीक से. And PI is given as iron loss, constant is given, and X square is variable as per, and PCU मतलब copper loss. PCU मतलब copper loss at full load. न्यूमेरिकल में copper loss at full load ही दिया होता है. Read the questions carefully. At P300 मतलब E1 मतलब प्राइमरी का वोल्टेज, E1 is given, E2 is given, E2 is 110, 50 hertz the frequency of Indian power supply, 50 kVA. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, K. 50 kVA, it is the rating of transformers, has a full load copper loss. Full load copper loss मतलब क्या, यहाँ पर लिखा गया है CU for copper loss, PCU is for full load copper loss. It is a full load copper loss. Full load मतलब PCU, CU मतलब copper, and FL for full load is 1600 watt. And iron loss मतलब कौन, iron loss मतलब कौन, PI. PI is iron loss. Okay. Just put it correctly. What you have to find first, efficiency at what? Students, do you have calculator with you right now? Student, do you have calculator with you right now? Yes or no? Calculator है क्या आपके पास? Yes sir. बस इसके वैल्यू पुटअप करो बराबर जगह पे. X की जगह फुल लोड के लिए 1 मैंने लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे पावर फैक्टर का वैल्यू क्या लिखा है, 0.7 फॉर फुल लोड, एंड हाफ लोड के वक्त पावर फैक्टर 0.85 है. तो पहले केस में आपको दोनों बार न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फॉर 0.7 and 0.85. Okay, I have all values with me, but let us solve first by students. Solve this numerical for efficiency at full load. Full load मतलब केस 1. Efficiency at full load, उस वक्त आपका X वैल्यू क्या होगा, 1. X वैल्यू क्या होगा, 1. V रेटिंग की जगह क्या लिखोगे आप, V रेटिंग की जगह क्या लिखोगे, 15 नहीं, 50,000 VA. 50 K को रिप्लेस करो बाय 10⁻3. पावर फैक्टर कितना होगा केस 1 में, 0.7. जो न्यूमरेटर में दिया है वही पहले, जो न्यूमरेटर में होता है वही पहले डिनोमिनेटर में आता है, वही डिनोमिनेटर में आता है. ऊपर जो है वही नीचे आता है. उसके बाद में प्लस, और पीआई की जगह 1200 और एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर एंड पीसीयू की जगह 1600. सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो और व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करो. आप जो पेपर पे सॉल्व करो इसे, टाइम लो, 2-4 मिनट लगेगा आपको, नो प्रॉब्लम, वी विल वेट फॉर दैट. न्यूमेरिकल्स एक पेपर लो, पेपर पे फॉर्मूला लिखो,
फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यूज लिखो, उसे सॉल्व करो और व्हाट्सएप पे वो इमेज शेयर करो। कुछ आंसर ऐसा होगा। ओके, ठीक है, स्टूडेंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, एक्स की जगह। ठीक है, हैव अ प्रैक्टिस। ओंकार, आपने क्या मैसेज डिलीट किया अभी? आपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी क्या? Please send the message. Just you have to use x equal to 1 correctly because full load दिया है case number 1 में. You need to find out the efficiency at full load. For full load, x equal to 1. For power factor, 0.7. PI is given, yes, iron losses. PCU is given, yes, copper losses. What is the rating? 50 kVA. 50 kVA मतलब कौन? 50,000, 50,000. 50,000 VA. Because K replaced by 1000. So 50,000 VA. Whatever values I have written or just highlighted, those values you have to write. X equal to 1 for full load. You must know it. Half load, x equal to 1 by 2. Power factor in case number 2, 0.85. चलो आंसर बता दो और व्हाट्सएप शेयर करो। सर 0.92
Yes, Siddhant, your answer is correct. So 0.92. शेयर करो इमेज, शेयर करो इमेज, इसमें इमेज शेयर करो. आप फास्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताता चले ना. बाकी पल्लवी, ओमकार, this was the answer. For efficiency at full load, put x equal to 1, power factor equal to 0.7 in the above equation. So सिद्धांत आपने बराबर लिखा है 1 into 50,000 into 0.7, 1 into 50,000 into 0.7 plus 1200 plus 1 square 1600. In percentage, it's coming out to be 92.59%. Can you do it for second case? It's simple for you in second case also, but in second case you have to find efficiency at half load. Efficiency at half load. For half load, x will be replaced by 1 by 2. Can you do it? Efficiency at half load, x, put x equal to 1 by 2. Power factor equal to आधा. Efficiency at half load, you have to put x equal to half 1 by 2. Power factor equal to 0.85. मतलब PF की जगह 0.85 लिखोगे. V rating replaced by how much? 50,000. यहाँ पे 50,000 लिखा है मैंने. V rating replaced by 50,000. V rating at full load. V rating replaced by 50,000. You can see numericals is completely solved here. X equal to 1 by 2. X की जगह 1 by 2 लिखना है. That's all. Power factor की जगह 0.85 लिखना है.
PI की जगह सर 0.9 हाँ करेक्ट। करेक्ट। इमेज शेयर कर दो, आपने कैलकुलेशन किया है तो इमेज शेयर करो इसमें। सर एक्चुअली मेरे फोन का इंटरनल स्टोरेज खत्म हो गया तो मैं कैमरा से फोटो नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे थोड़े Okay. से एडिट करने पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, just a minute. Students, we have solved one numerical. We have solved one numerical on this slide at the bottom. Just practice on that numerical. Okay. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया न्यूमेरिकल का? मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज 25 KVA? वी एडिटिंग मतलब कितना हो गया अभी? 25,000। व्हाट इज कॉपर लॉस? कॉपर लॉस का सिंबल क्या है? PCUFL। नेक्स्ट, बाद में क्या दिखाया? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस कहाँ पे है? 400 watts. Sorry, 400 watts are the copper losses. 400 watts are the copper losses. And 350 is the iron loss. Okay. Can I solve this numerical? 50% of full load. 50% of full load मतलब क्या? X is equal to 1. No. Vismay, read it once again. Yes, 50% of full load. Hi. In this video, we're going to look at the features you can use in Burp Suite to help you brute force the password of a given user to gain access to their account so and additional attack surface. 0.5. For example, Very correct. you can use a list of common passwords, often known as a dictionary attack. आपके पास एक glass है, okay? The example we're going to use is simplified so we can demonstrate how to use the relevant features of Burp Suite. To run these attacks on real websites, you usually also need bypass defenses such as rate limiting. Before you start, you'll need to identify one or more valid usernames for the target website. You can use Burp to help you with this task as well. If you'd like to follow along, launch the lab User Role Controlled by Request Parameter from our Web Security Academy and use the username listed in the lab solution. Once the lab has launched, try to log in with the correct username and an incorrect password. Then, from the proxy HTTP history tab, send a request for submitting the login form to Burp Intruder. Go to the Intruder Positions tab and select the sniper attack type. Highlight the password value and click on Add to Marked Payload Position. Make sure the request uses the valid username you identified. Now, go to the... हाँ, मामूली गलत होता है, लेकिन एक हाथ दो मार्क मिल जाते हैं उसमें। कि आप डेटा बराबर लिखते हो ना,
डेटा बराबर लिखते हो तो एक आधा मार्क मिल जाता है, लेकिन पूरे मार्क नहीं मिलता है, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल 8 मार्क का होता है। ओके सर। बहुत इजी और अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और इजी मार्क मिल जाते हैं इसमें। बस जस्ट रीड इट करेक्टली। 50% ऑफ फुल मतलब 50% ही होता है, बराबर ना? ग्लास है, ग्लास है, एक्चुअली वो 50% ही फील हुआ है आउट ऑफ इट्स ओन 100% कैपेसिटी। अगर ये 70% फील हो जाए तो 0.7। 0.7 करेक्ट। 70% पे फील हो रहा है ग्लास, तो 70 डिवाइड बाय 100 मतलब 70%, मतलब उसे कहेंगे 70% फील्ड वाटर। यहाँ पे लिखा था वाटर इज 70% ऑफ फुल वाटर, मतलब कितना भरा है? 0.7 भरा है, 30% खाली है, ऐसा कहने की जगह 70% भरा है। ओके, एक्स का वैल्यू बराबर यूज करो, एवरीथिंग विल बी राइट। सेकंड केस में x इक्वल टू 70% ऑफ फुल लोड, मतलब x इक्वल टू Under payload settings, add a list of passwords you want to and losses are test. given to you. Ideally, these should be sorted in order of how likely you think the password is to be correct. 25 kVA In Burp Suite 25,000 Professional, use करना उसे बस। you can open the की हटाकर Add List 10,000। from drop-down menu and इतना select the करोगे passwords students, list. आपको easily marks मिल जाएंगे। If you're using Burp Suite Community, you'll need to add a list of passwords manually. Click Start Attack. Answer is also given to you. If you are okay, formula is at the top. When the attack is finished, Numerical is at the study the bottom. responses and look Its for any answer is behavior that may really at indicate the a valid last password. line. Its answer. You can look for differences in error messages, Efficiency at half response load times, with or unity power status factor is codes. 96.52%. And In this efficiency at example, 70% we of can full see load one of with the power factor equal to responses returns a 302. is 96.24. If you want to investigate the contents of responses in more detail, you can right-click and choose If time Send to permits, you verify Comparer both answers. Response. And do the same for the original get it done. response. Get it done. When you go to It's the not Comparer tab, difficult. you can select the two Any responses difficulties and there, click you just words message or me, bytes post to me. highlight the differences between the two Where is responses. anything going wrong, I will help you Burp Intruder out. also includes an option to run an exhaustive brute force attack. With this approach, you're attempting every possible permutation of a character set, which enables you to brute force passwords that don't necessarily appear in a word list. For longer passwords and larger character sets, though, this type of attack can become impractical due to the number of requests needed. Efficiency, just a minute. Efficiency at screen rotate हो रहा है। Look at the features count of commenting to you to run the. Before you start, use Burp to launch the EEE History tab. Send the request for submitting the. Okay. This is correct. This is correct for first numerical. ये correct है। ये भी correct है 0.85, 0.97, लेकिन ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है और ये भी फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पर इसमें आंसर डेविएट क्यों हो रहे हैं?
एक मिनट, ये किसका स्क्रीनशॉट है? मेरा सर। इसमें आपने क्या गलती की है? देखो यहाँ पर एक गलती है कि ये 1200 को हाफ किया है आपने। 1200 1200 इंटू 1/2 किया है। आपको 1600 को 1/2 करना था, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 1600 को करना था। तो आपका एफिशिएंसी गलत हो गया, यहाँ पे 92% आ रहा है, गलत है। आपका एफिशिएंसी 92 नहीं 97% आना चाहिए था। आप इससे देखो, आप इसे देखो और इसे देखो। इसमें किसको किया है 1/2 स्क्वायर? यहाँ पे देखो 1/2 स्क्वायर किसे किया है? 1600 को किया है। दिख रहा है आपको? ओके सर। हाँ। मतलब बेसिकली यू आर लैगिंग इन द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला आल्सो। मतलब आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पे यूज करना है, दैट इज नॉट क्लियर। एक्स स्क्वायर किसके साथ है? एक्स स्क्वायर किसके साथ है? पीसीयू के साथ है या पीआई के साथ है? पीसीयू। करेक्ट। सो पीसीयू कितना है यहाँ पे? पीसीयू कहाँ पे है? 1600। ये आपसे गलती हुई है। ओके सर। तो पीसीयू 1600 है, तो 1600 के साथ 1/2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 और एक्स स्क्वायर 1/2 मतलब 1/4। 1600 डिवाइड बाय 4 होगा वहां पे। और आपने क्या किया? 1200 डिवाइड बाय 4 कर दिया। 1200 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना? 300। और वहां पे 1600 डिवाइड बाय 4 मतलब 400। 100 वैट से आपका आंसर बहुत डिवीट हो गया। ओके यस सर। ठीक है, इट्स गुड। आपने सॉल्व किया तो आपको डिफिकल्टी ध्यान में आ गई। है ना? न्यूमेरिकल इजी है, सब कुछ इजी है, लेकिन प्लेसमेंट इज मस्ट, प्लेसमेंट मस्ट बी करेक्ट। सिद्धांत ओके। बाकी पल्लवी, सिद्धांत ने अच्छे से सॉल्व किया है। ओमकार, पेन पेपर साथ में नहीं है क्या? खाना खाने गए या कहाँ गए? ओमकार पल्लवी दोनों का कुछ भी अपडेट्स नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही पास होंगे, अदरवाइज मुश्किल है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्किप दिस डीसी मोटर्स। ओके we'll skip these DC motors. You just try to understand application of permanent magnet DC motors. Application of permanent magnet DC motors is used for domestic applications like जो छोटे छोटे मोटर होते हैं ना हमारे ड्रोन्स में, ड्रोन नहीं, छोटे छोटे टॉयज कार में, this sort of small motors, very low power motors, very low power motors. Just a minute. This sort of motors we are using in toys. This also they are used in toys. Their voltage control and speed control is very fast. Even in toothbrush, automatic toothbrush, we have a motor here. Brush is on one side, motor is at the center along with power supply at the bottom. Power supply यहाँ पर होगा, चार्जर छोटा बैटरी यहाँ पर होगा, और आपका मोटर जब वाइब्रेट होता है तब आपका ब्रश ऑटोमेटिक हो जाता है। In toys, here we have motors. Okay, this motor is low cost. Its motor is low cost. It is used in smaller applications, low cost, low power, battery operations, and commonly used in small appliances like toys. इस मोटर का नाम क्या है? परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स। ये मोटर आपने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है? एक साइड में एक मैग्नेट होता है, दूसरी साइड में दूसरा मैग्नेट होता है, और बीच में होता है कॉइल जिसको हम करंट देते हैं, और करंट देते ही वो कॉइल रोटेट होता है। Just I'm going to for applications, not any other theory. Application of motor is used for small applications. What is BLDC motors?
Student applications I am going to cover now. This BLDC motors में ये सबसे पहला B for brush. B for brush. Okay, जा रहा है वो. ठीक है, no problem. I'll erase. This B for is brush. B L DC. DC मतलब इस मोटर को हम सप्लाई ही DC देते हैं, इसलिए इसका नाम DC मोटर है. So what is name of motor is BLDC. BLDC motor is normally used in various applications. इसका नाम क्या है? BLDC. इसमें ब्रश नहीं होता है, ब्रश लेस. पुरानी मोटर जो देखे गए थे उसमें ब्रश होता है, ब्रश से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से लॉसेस होते हैं, उससे स्पार्क भी होते हैं. ओके, इस मोटर का एडवांटेज ये है कि इसमें ब्रश, विदाउट ब्रश यू कैन रोटेट द मोटर बाय यूजिंग ड्राइवर. क्योंकि ड्राइवर पता करता है कि हमारा मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज. ये मोटर देख रहे हो आप, फास्ट घूम रहा है यहाँ पे सेंटर में. उसे ड्राइव करने के लिए हमें लगता है ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड एज डिकोडर. यहाँ पर नाम लिखा है डिकोडर सर्किट, इसे कहते हैं ड्राइवर. जिससे कोई व्हीकल है उसके लिए ड्राइवर लगता ही है. ओके, वैसे ही इस मोटर के लिए, इस मोटर को ड्राइव करने के लिए, घुमाने के लिए एक ड्राइवर लगता है. और ड्राइवर सर्किट को इनपुट कौन देता है? सेंसर्स H1, H2, H3. If more number of sensors are there, no problem, they can be there. But here in basic diagram, we have kept 3 sensors. One of sensor is called as H1. You can see the position of H1 here. यहाँ पे एक रॉड दिख रहा है आपको, H1, एक ब्लैक कलर का रॉड दिख रहा है, वो एक सेंसर है. यहाँ पे H2 है, एक रॉड है, उसके सामने सेंसर लगा रखा है जो आपको कलर चेंज कर रहा है. दिख रहा है आपको कलर चेंज करते हुए कोई डिवाइस? यहाँ पे सामने जहाँ पे S3 लिखा है उसके सामने कलर दिख रहा है आपको रेड. H1, H2, H3 के सामने कलर दिख रहा है रेड, थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है रेड कलर. H1, H2, H3 जहां पर लिखा गया यहाँ, वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि आपका मोटर कहां पर है. H1, H2, H3 है जहां पे पहले, बाद में You and you all are fired. लाइन है, एक छोटा सा लाइन है, And you, कर्सर है. 3-star my वो कलर चेंज करते हैं जब उसे bases with the weakest troops in Clash of Clans and win $1,000. This might seem impossible, but I have invited Cynthia, who we know is one of the best players in the world. If anybody can do this, I think it would be him. Rules of this challenge are pretty simple. I sent Cynthia all of my war bases, but with scout view enabled, so he could come up with a plan just like in war. Only the first 5 troops of Clash of Clans, the Barbarian, Archer, Giant, Goblin, and Warbreaker can. He is in for the first attack. Just 2 minutes to goodness, 160 barbarians and 160 archers pulled it together, Judo. Oh my gosh! Now he can use the super troop variants in the siege machine. He can only boost 2 super troops for his actual army, but he's chose none of them here. Maybe he didn't see that in the rules that I sent him, but this is cool either way. Lightning spells to that bottom left side. Wow, he took out the scatter shots, the expo. That was amazing value. There's not a lot of point defense over there now, so he can probably just pick off those cannons or maybe even send his heroes in, but he's obviously concentrating on the town hall first. Just a couple of barbarians and archers used in order to help. Earthquake to activate the town hall. Perfect timing for the flame flinger to move across. It is targeting the bomb tower first, but after that, it should lock to the town hall, and it looks like he's just waiting until that happens. There we go. It's on the town hall. It's safe. I wonder what is inside there, because he's not going to need sneaky goblins for the town hall. So let's try and keep an eye on that flame flinger as his heroes move in from the right hand side. Level 90 heroes now, but he's still got
pretty much his entire army. He's using the Barch on the outside of the base to keep his heroes moving through the middle. There is all of my troops. Maybe I'll have to boost something up for the second one because his poison is wiping them out. His Barbarian King locked onto by the single. He did not freeze. Phoenix brings the Barbarian King back alive, but I feel that is huge. He does not have that Barbarian King now to tank. Royal Champion also locked onto by the single. Turns the defenses invisible to send the Royal Champion straight to the single target Inferno. Very, very wise move there. He's still got 200 Barbarians and Archers. Here they come, mass attacks from the bottom of the base. He's got to be careful on the splash defenses, but the Royal Champion doing a very good job over there. Now if she can get down to the multi-inferno, which it looks like she can. 2 free spells left. The Royal Champion ability, he's just going to freeze the monolith. And then he should be able to get through the back end of the base here. Synthe, what a start! What a start to this challenge! Barbarians and Archers, swagging so many of them. $250 for this first attack. Wow! Screenshot that. Oh my goodness. He didn't even use super troops, but I'm going to use them in the CC. Base number 4 is the second attack. Good luck, Synthe. Here he goes. What has he got this time? 106 sneaky goblins. I still can't believe he used Barch for the first attack. Oh, interestingly, using them to test for Tesla for the Flame Flinger. What would he have done if there was, like, skeleton traps there? He's got 0 barbarians or archers or anything. Skelly Donut! Synthe! I should have expected it! Single target Inferno is about to go down. Clan Castle is about to go down. He is the master at that. I have never seen anybody do a Skelly Donut better than Synthe. So risky and just to precision. If you turn the Clan Castle invisible, you are doomed. Now let's focus across to the Town Hall a bit. He's using goblins to snipe things around the base, but it looks like he's hasting into the Town Hall. Not going to use an invisibility spell. Just going to haste the goblins in and try and use enough of them. Now he's only sending a couple there. Interesting. Oh, to pop the invisibility spell tower. Then he's going to push, I don't know, 10 of them in. How many will he need here? Just the haste is going to push them forward. There they go. Builder Hut's repairing. Oh, he just got it before they got flattened. What is inside this log launcher? More sneakies. Log launcher. Flame Flinger. Okay, now the hero's moving in. All of the storages inside the base are basically down. Will the goblins just target defenses now? Where are they going? What are they targeting? Okay. They just ran straight past the air defense, but I can't see any other resource buildings. Maybe there's some that... Yeah, they're targeting the cannon! Synthe, this is great! Okay, he's still got a lot of base to take down though. RC shield, freeze spell, monolith is still up. Only 18 sneaky goblins remain. They are targeting defenses. That is the main thing. King just came back to life. Oh no, the Phoenix actually is still alive. We've got the RC ability and a freeze spell. Monolith is on the RC. He freezes it. Perfect timing. Diggy now stuns that Monolith so he can get through, but there's a lot to the back end of the base here. Will he risk everything for $1,000? Let's see if he'll do it. Do you want to risk it all for $1,000? Currently $250 from the first attack. 3-star the next, and all 1,000, no 3-star, and nothing. He said yes! He said yes! Here we go. Oh, it is my actual war base. Base number 2. I'm going to go with that original Clan Castle combination. Best of luck, Synthe. $1,000 on this single attack. Here we go, only 1 minute to scout. 64 giants! Synthe! What? The last time he was on the challenge was the single troop challenge. We've got a Skelly Donut in the middle of... He's going for the Town Hall. Monolith, CC, and Town Hall. Oh, the Builder Hut is acting as his anchor as to where to drop this. No, wait, that's the last invisibility. Look at all of the Skellies on the Town Hall. He's frozen as well. He got it! No.
I don't think you realize how difficult that is. Portable power tools. The town hall. Portable power tools like what? In a single try like that. Oh my goodness, he didn't pop the rage tower. Now he has all of the heroes moving in. We've got a flame flinger at the bottom of the base. Let's see what he's got going on here. 61 giants now can just help to tank for his heroes. He's made a big put. 10 giants moving in alongside the warden ability, now spreading them around the outside as well, so that we can just have the heroes moving through the middle of the base. Royal Champion not yet deployed. We've got giant. The issue is it's difficult for him to funnel, right? Because the giants are only defense targeting. How does he get his other troops into the base? Is Archer Queen's going in, is she? Or is she walking? The multi-mortar, I think, might get him. He needs a couple of other giants there. Yeah, I think the multi-mortar is going to pull his Archer Queen around the outside. That's really tricky. But we still have plenty of giants. 30 left over. Flame Flinger doing a good job at the bottom. He's already popped that rage tower. Now we've got the Royal Champion moving in. I am intrigued on that enemy Archer Queen. His queen walked in! She's going to get that enemy queen! Oh my goodness, no way. He's collapsing in on the defenses. He should be able to get this as long as time is not an issue. He cannot clean up the non-defensive buildings. He really wants some of the sneaky goblins from that previous attack right now. RC ability goes off. This multi-inferno beaming through all of the giants, trying to send more down to the bottom here. Is he going to get this one down? Come on! Oh, no way! I did not know that spring trap was there. We've got a Barbarian and Phoenix at the top side. Royal Champion gets that. He needs this Royal Champion to stay alive. If he has any chance of getting this, he has to have her stay alive. $1,000. Oh my goodness! Just nothing is going right for him. Oh, Archer Queen! She turned from one wall to the next! What? 17 seconds! And Cynthia, with time being the factor, 95%! What? It says 97% in the chat! Let's give him 500 for being a good sport and being so close. If you want to see last time when he did take on the one troop challenge, I have that video linked on your screen. Have a good day. In a printer, oh my gosh. घर में अगर प्रिंटर हो, कहीं पे भी आपने ऑफिस में कहीं प्रिंटर देखा हो, तो आप जरा ध्यान से देखना, आपका प्रिंट होकर पेपर तुरंत 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड में बाहर नहीं आता है. प्रिंटर हर एक बार एक लाइन प्रिंट होते होते वो प्रिंट पेपर बाहर आता है. Because there also we use stepper motor. Stepper motor works in steps. पहला स्टेप कंप्लीट होगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर एक स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद नेक्स्ट स्टेप चलते रहेगा. Till your work is not done. Till the time input is there, motor will run. If input stop, motor will also stop moving. That is called a stepper motor. Stepper motor works in steps. That's important, and you can change the steps. You can change the steps. That is there in your hand. How to change the steps? अगर आपने स्विच A को क्लोज किया तो मोटर विल रन. आपने स्विच 2 को क्लोज किया, मोटर विल रन. आपने स्विच 3 को क्लोज किया, मोटर विल रन फर्दर. एंड स्विच 4 को क्लोज किया, मोटर विल रन फर्दर. अगर आपको और घुमाना है मोटर को, तो वापस स्विच 4 के बाद में वापस स्विच 1 पे आ जाओ. Again switch 1 2 3 4, switch 1 2 3 4, switch 1 2 3 4, and the motor will run in one direction. Motor will run in one direction. अगर आपको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करोगे? आफ्टर स्विच 1 यू गो टू स्विच 4, स्विच 4, स्विच 3, स्विच 2, स्विच 1. स्विच 1 के बाद में वापस स्विच 4 उल्टा घुमाओ. मोटर को उल्टा घुमाना है तो उल्टा जाओ. स्विच 1 से लेके स्विच 4 से लेके रिटर्न स्विच 1, एंड इस तरह से आप घुमाओगे तो मोटर विल रन इन अपोजिट डायरेक्शंस. एंड दैट इज डन बाय व्हाट? ड्राइवर. ये टास्क कौन करता है? ड्राइवर. स्विच 1 को क्लोज करना है, 1 2 3 4 को जाना है, या फिर 4 3 2 1 को जाना है. दैट इज डिसाइडेड बाय यू एज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. एंड जस्ट आपने कमांड दिया स्विच 1 से लेके स्विच 4 जाना है या स्विच 4 से लेके स्विच 1 जाना है. दैट विल चेंज योर डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज देयर विथ स्टेपर मोटर्स. स्टेपर मोटर्स एप्लीकेशंस में की बात कर रहा था मैं. प्रिंटर्स को स्टेपर मोटर इज देयर. पेपर फीडर, पेपर प्रिंटिंग मशीन, पेपर CNC स्टेपर CNC मोटर,
CNC मोटर कभी भी एकदम एक्यूरेट काम करता है, ओके, बिकॉज ऑफ ओनली स्टेपर मोटर, बिकॉज स्टेपर मोटर इज वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जितना ही आप इनपुट दोगे उतना ही वो रोटेट होता है। आपने इनपुट बंद कर दिया, मोटर रोटेट होना बंद हो जाता है, ओके। CNC मशीन, लेथ मशीन्स एटसेट्रा, we can go for that motor, okay students। Suraj, okay, good. So what are the numericals? First numerical on EMF equations, latecomers, ये वापस से जाते हैं। मोबाइल हैंग हो रहा था इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया। Okay, no problem, Suraj. Okay, no problem. For you, I am going back. First type of numericals, it can be over here. This is the first variety of numericals. The first variety of numericals where it is on EMF equation plus current calculations. Okay. Second numerical is on EMF equation of transformers. No, efficiency. This is second variety of numerical where data is just written on a first slide. Calculation is done on second slide. For first answer, and calculation is done for second part over here. And one answer, one numerical is given unsolved. Okay. सर सेकंड वाला न्यूमेरिकल बताइए इसके पहले। ओके, देन डायरेक्टली यहाँ पर आ गए थे, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप आगे थे, यहाँ पे शायद आप थे, है ना? मोटर का डिस्कस कर रहे थे तो आप थे वहां पे। मोटर डिस्कस कर रहे थे हम, कौन से मोटर डिस्कस किया हमने? सिर्फ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर्स, यूनिवर्सल मोटर्स एंड स्टेपर मोटर्स पे हमने सिर्फ डिस्कशन किया of a very small duration only on applications. Only on applications. Okay. Because I want there should be four parts should be there, and out of 4 you can solve some good sort of theory. Okay. सर आपने ये PDF ओपन किया था, ये PDF किधर है? हाँ बोलिए ना, PDF। सर आपने जो PDF ओपन किया था ना अभी, वो वीडियो किधर मिलेगी हमें? कौन सा वीडियो? ये वाला पूरा रिकॉर्डेड, ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है ना? यस सर। हाँ, एक मिनट, ये पूरे के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। मूडल, हाँ मूडल में मिलेंगे आपको, मूडल के थ्रू ही मिलना है सब कुछ आपको, डेटा जो मिलेगा वो मूडल के थ्रू ही मिलेगा। एक मिनट, MIT AOE नहीं, हाँ ठीक है। स्टूडेंट जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट थे उनका एक्चुअली क्विज थोड़ा लेट हो रहा है। ये क्विज जो था पुराना क्विज था, इसको मैं नहीं ले पाया था। कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस क्विज के लिए? आप में से कोई इंटरेस्टेड है अभी? सर अगर हम देते हैं तो लाइक बेस्ट ऑफ 2 आप कंसीडर कर सकते हैं क्या? लाइक जिसमें अच्छा मार्क मिला वो अगर कंसीडर आपने कर पहला सकते क्विज दे रखा है, सुनो ना, आपने पहला क्विज दे रखा है तो ये क्विज मत दो। दिस इज अ रिपीटेशन। ओके, इट्स अ रिपीटेशन। ओके सर।
तो मैं आज का टाइम सेट कर दूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो क्विज है ना, इंडिपेंडेंस डे था ना 16 अगस्त, उससे शाम को आपने रीशेड्यूल किया था, उसका पासवर्ड हमने डाला तो वो इनकरेक्ट बता रहा था। हाँ, तो वो क्या हो गया एक्चुअली, पासवर्ड मैंने डिस्प्ले किया था, पासवर्ड मैंने इस पे सेट किया है, मैंने ही पासवर्ड सेट किया है। एक ही मिनट, हाँ, मैं एडिट करता हूँ और पासवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। सर पासवर्ड हटाइए। सर ये ट्रांसफर और इफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है, हाँ वो मैं ये एग्जाम हो गई ना, ये आया था वो क्वेश्चन। एक्चुअली पासवर्ड कुछ और है, पासवर्ड कुछ और है, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था पासवर्ड चेक करने के लिए। आपको मैंने पासवर्ड बोला था ना 11124। हाँ सर बोला था सर। हाँ, तो वो गलत था। मैंने एक्चुअली उस पासवर्ड, ये पुराना पासवर्ड है, उसको चेंज करके मैंने नया डाला था, लेकिन वो पासवर्ड सेव नहीं हुआ एज अ 11124, और उसने पुराना ही पासवर्ड लिया। तो फिर मैंने जो पासवर्ड डाला था वो तो मैंने दे दिया आपको, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने पासवर्ड, हाँ, तो अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। जो 3 या 4 स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्विज 1 अगेन, यूनिट नंबर 1 2 3 4, ओके। और जो स्टूडेंट्स ये देने वाले थे क्विज क्विज ऑन यूनिट नंबर 3 एंड 4, उनका टाइम क्या रखूं आज? सर आफ्टर 8। आफ्टर 8, ओके। हाँ 8 to 8:30 बजे। ओके, जस्ट मिनट, मैं आपको इसलिए रुका के रखा हूँ कि मुझे आपको एक और एक चीज दिखानी है, इसलिए मैं रुका के रखा हूँ। आपको देना है मुझे लिंक। सर 6 to 7 सर। हाँ सर एक मिनट, इसका लिंक लेता हूँ मैं। गेट लिंक, गेट लिंक, गेट लिंक कहाँ पे है इसका? कॉपी, कॉपी लिंक, ठीक है, ओके। अभी मुझे आपको देना है ये लिंक। सो वो लिंक में एक्सेस दे दो। हाँ, लिंक में एक्सेस भी देता हूँ, लिंक का एक्सेस सिर्फ MITOE वेबसाइट से ही मिलेगा आपको। ओके सर। सर और क्विज 6 to 7 चलेगा क्या? नहीं, 6 to 7 तो वो पुराना क्विज रखा है मैंने, तो ओनली फॉर बैकलॉग स्टूडेंट्स जो उन्होंने पहला क्विज मिस किया था। जिन स्टूडेंट ने पहला क्विज मिस किया था उनके लिए ये है अभी। दूसरा क्विज जो अभी ऑल स्टूडेंट्स के लिए रखना है, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू के लिए मुझे ये रखना है, एक सेशन रखना है। फोल्डर बैकलॉग फाइल बुक, ठीक है, फाइल में रखते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा दो ना। कब रखना है बताओ ना मुझे, मैं तब मेरा दूसरा काम तो कर ही रहा हूँ। सॉरी सर। आप सर डिस्कस 4 करो to आपस 5 में। 4 to 5 कितना? 4 to 5
4 to 5 सभी रेडी है कि सबके पास मैसेज पहुंचेगा क्या? ये सर ग्रुप पे डालेंगे। और जिसका मैसेज जिन्होंने नहीं देखा उसको क्या करोगे? सर थोड़ा क्विज का टाइमिंग है ना, बच्चा दो ना 130 मिनट्स तो दे दिए है। कितना मिनट? 30 मिनट्स। 30 नहीं, 15 क्वेश्चन वो सॉल्व करने में टाइम लगता है। नहीं, इतना टाइम की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं देते हैं क्विज में। क्विज में बैकएंड में क्या चलता है मुझे पता है। यहाँ पे देखो ट्रिपली ऑनलाइन लेक्चर्स रिमीडियल, ठीक है, इसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस फोल्डर में आ जाओगे, ठीक है। इस फोल्डर में मैं पूरे लेक्चर्स अपडेट कर रहा हूँ। सारे भी जो भी रिमीडियल लेक्चर्स हुए थे उनको मैं वहां पे रिकॉर्ड अपलोड करता हूँ। ओके सर। ओके, वेट, हाँ वेट, डोंट लीव। ओके, अटेंडेंस टेक, सर हमारे जस्ट मिनट।